I am reading it out. Footprints that perhaps another, selling of a life's solemn man, a forlorn and shipwrecked brother, sing still take heart again. Again mark the line. Footprints that perhaps another, selling of a life's solemn man, a forlorn and shipwrecked brother, sing still take heart again. Let us find out the difficult words if there is any. If there is any. Then the difficult words in the first line, I think no difficult word is there, but a word is there another. Who is another? Here another means another person, but it refers to that man in distress, that miserable man in our society who has lost all his hopes of survival. एठारे अनदर माने अन्य एक व्यक्ति को बुझाऊँगी जो व्यक्ति की ए समाज रे बंचिबार आशा छाड़ देछि, से कठिन समय मध्य गति करछि, से असहाय भाव दिन काटुछि, से असहाय व्यक्ति को एठी बुझाऊँगी। आउ फर्स्ट लाइन जो फुटप्रिंट्स अच्छी एटा बुझाऊँगी आम मानकर फुटप्रिंट्स, नॉट द ग्रेट मैन ऑफ द पास्ट। आमे जो फुटप्रिंट्स छाड़ी जीवो से एनदर व्यक्ति, हु इज दैट एनदर मैन ना ए मैन इन डिस्ट्रेस, दुर्दशाग्रस्त मनीष, मिजरेबल मैन, दुखी मनीष जे कि आमर एग्जांपल फॉलो करिवो, सेटा हला फुटप्रिंट्स, दैट इज आवर फुटप्रिंट्स। सेलिंग ऑफ अ लाइफ सोलेम मैन, वेरी इजी वर्ड्स एक्चुअली। सेल माने टू फ्लोट, टू ट्रावेल बाय शिप, जहाज रे नौ विहार करिबा सेल कहा जाउछि। सोलेम, a majestic, vast, impressive. Solemn. Man माने सी, समुद्र, ओशियन, सागर। Then the meaning of total line is selling of a life solemn man, a man who is passing through hardships actually in the sea of life, in the vast sea of life, a man who is passing through hardships, जे कि ए जीवन रूपक समुद्र रे दुखर जीवन अतिबाहित करुछि, दुखर जीवन अतिबाहित करुछि। इन द थर्ड लाइन फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न माने लेख मिजरेबल बा दुखी बा होपलेस। मिजरेबल, FORLORN, फॉरलॉर्न माने मिजरेबल। शिपरेक्ड ब्रदर, एक्चुअली नाउन ने जदि आम देखा शिपरेक, शिपरेक माने शिप एक्सीडेंट। शिपरेक इडी लगी नथिबो, शिपरेक माने शिप एक्सीडेंट। एटी शिपरेक्ट माने कहाउछि मेट विथ ए शिप एक्सीडेंट, जहाज एक्सीडेंट सम्मुखीन होइथिबा। इन ओडिया दैट इज कॉल्ड जहाज एक्सीडेंट सम्मुखीन होइथिबा, जहाज दुर्घटनार सम्मुखीन होइथिबा। इन इंग्लिश सपोज वन हु हैज मेट विथ ए शिप एक्सीडेंट, one who has met with a ship accident. And in the last line, take heart. Take heart माने कौन? Take heart previous stanza में मैं कही heart माने courage. And take heart माने to have courage, to have boldness, to have courage, साहस बांधिबा, साहस पाइबा, ये ला टेक हार्ट माने।
आगे ओडिया रे ब्रीफ सामारी कही दउछि एटी प्रथम लाइन जो कहाछि फुटप्रिंट्स दैट पारप्स अनदर सेही पाद चिन्ह सेही महानतार एग्जांपल जो एग्जांपल आमे मरीगला बेले छाड़ी जीवो सेरा किए फॉलो करिवो किए ताको अनुकरण करिवो ना से कुछ दैट पारप्स अनदर बोध हुए आउ कहीं दुर्दशाग्रस्त दुखी लोक जनक से फॉलो करिवो जे समाज रे जे जीवन से कहाउछि से कष्टपूर्ण जीवन यापन करुछि एई विशाल जीवन रूपक सागर मध्यरे ए विशाल सागर रूपक जीवन रे समुद्र कहली भूल कहली मु विशाल सागर रूपक जीवन रे जे कि दुख रे अतिबाहित करुछि तामाने ताकू कहाउछु ए मैन इन डिस्ट्रेस दुर्दशाग्रस्त व्यक्ति आमर समाज रे थिबा को भाई जनक एवं कहाउछु सेही व्यक्ति जनक ही फॉलो करिवा आमर पाद चिन्ह आउ सेही दुखी जनक देख ताको सिपरेट ब्रदर सहित तुलना कराई सिपरेट पार्सन सहित तुलना कराई जो लोक जहाज एक्सीडेंट सम्मुखीन होती सहित तुलना कराई एठी जहाज एक्सीडेंट सम्मुखीन होता कहीं लोक ना ये नाविक कहुच्छे बा सेलर कहुच्छे जो सेलर बा जो नाविकर जहाज एक्सीडेंट हो एवं से ढेउर भासी भासी को अजणा कूल लगी को जनशून्य कूल लगी सेठी से असहाय मन कर कुआडे जीवन से अंत देखिपार एवं जदि सागर बाली उपरे बा बालुका उपरे कूलर जदि कहारी पाद चिन्ह से देखुछि से लोक भितर आशार संचार होछि जे एपटे कई व्यक्ति जाइछि तेणु आशार संचार से लोक भितर होछि जे एपटे मु भी गले हुए तो मु बंची पारिबी हेले आउ थरे कहि जाउछि सिपरेट ब्रदर जहाज एक्सीडेंट सम्मुखीन होइथिबा नाविक जनक एठी केही नह से आम समाजर असहाय व्यक्ति आम समाज रे दुर्दशा दिन काटुथिबा कष्ट दिन काटुथिबा से व्यक्ति जनकु तुलना कराहेछि सेई जहाज एक्सीडेंट सम्मुखीन होइथिबा नाविक जनक सहित तुलना कराहेछि तमने एटी केही को जहाज नाही को सेलर बा नाविक नाही एटी केवल तुलना कराहेछि जने असहाय नाविक जार जहाज बुड़ी जाइछि एवं असहाय भाव को कूल लगी आउ से असहाय अनुभव करुए और दुख करुए जो समय जदि बालुका उपरे कहार पाद चिन्ह देखुची तो बंचीबार आशा संचार ता देहरे होउछि एवं ताकू देखिकी से निजे नुआ आशा पाई पारुछि सत्साहस पाई पारुछि जे मु भी जदि एई रास्ता रे जीबी ताले मु भी बंची पारिबी सेई रास्ता को रास्ता से रास्ता को सागर नहीं समुद्र नहीं को बाली नहीं को कूल नहीं सेरा यही समाज रे आमे जो महापुरुष माने मरीगला समय रे जो आमे छाड़ी जो पाद चिन्ह से पाद चिन्ह को गोटे असहाय नाविक भाव से फॉलो करिवे तेबे से बंचीबार नुआ साहस पाइब एला ओडिया रे सामारी इन इंग्लिश In English, you see the footprints. Here these footprints actually refer to our footprints, not the footprints of the great men of the past. In the previous stanza we have already studied. If we follow the footprints of the great men of the past, we can make our lives great. And once we become great, we will leave behind us our own examples of greatness for others to follow. And here footprints means our examples of greatness. Perhaps suppose another man will follow. Who is another man? A man in distress, a miserable man in our society. He is expected to follow our footprints
and see right path to tread on. And he can see the right path to tread on. And explanation is the another man is selling our life soul man. He is passing through hardships. He is on a sea voyage. He is on a sea voyage. Here sea is not there. But who is passing through hardship in the sea of life, in the vast sea of life. That another man, that man in distress is passing through hardships. Or he is leading a dangerous life in the vast ocean of life. And that forlorn, that miserable and shipwrecked brother, here you see, my dear students, here you see, there is no ship here, no ship here, no sailor here. But that miserable man is compared to a miserable sailor, to a distressed sailor, to a hopeless sailor. Here the poet takes an example of a sailor, of a miserable sailor, whose ship has been wrecked and he has been washed ashore. And he has been washed ashore. And where he finds nowhere to go. So when he feels sad and hopeless, and by chance suppose if he sees footprints on the sands, suddenly he can get courage, he can have new hope of survival. And that particular sailor is here our man in distress. And those footprints on the sand of the shore of the sea are our own footprints of noble example. So are you clear, I think? Okay. Then if he sees, suppose if that sailor actually sees the footmarks of someone, suppose on the seashore, he gets courage to live. He gets hope to of survival. Similarly, here in our society, a hopeless, distressed, miserable man, if he sees our examples, if he follows our example, thereby he can get courage. He can have courage to go ahead, or to proceed on the right path. And finally, I am telling you, don't get confused. Don't get confused, forlorn and shipwrecked brother. What is sea and what is soul man? Don't get confused. So again, I am making you clear that the man in distress in our society is very clearly compared to that sailor. To that sailor whose ship has been wrecked and he has been washed ashore. And when that sailor sees footmarks on the sand of the shore, he gets courage. And likewise, this man in distress in our society also gets courage if he sees, if he looks at our footprints, if he follows our footprints. And okay, I think there will be no problem. Still, I am giving you final summary. The footprints of great manner, the valuable gifts offered to mankind actually by great persons. The footprints implies noble deeds actually, noble thoughts, noble characters, personalities of illustrious persons. We can also be great persons like them. After death, we can leave behind us such footprints to be followed by others. During the course of their lives journey, such persons who have been greatly disappointed in their failures,
and in their moral and material ruins. We'll see the footprints and will be encouraged to face any situation and overcome the hardships in their lives. Okay,